Hello friends, welcome to this new session. So in this video we are going to learn about important current affairs from the month of March 2023. Right? So you could subscribe the channel for all MBA updates and press bell icon to receive notifications of important videos like these. Right? You could also download the StudyBuzz app for free CAT MBA mocks and videos, and you could connect with us on Instagram and Facebook. If you're a serious MBA aspirant, then you could definitely check out the StudyBuzz pen drive, right? Because it gets you direct plug and play videos, complete ebooks, no internet is required to access any of the videos, right? All test series are included. You could play it unlimited times. आपको साथ साथ मिल जाता है भाई 24/7 डाउट फोरम पोर्टल, राइट? आपकी जो प्रिपरेशन है वो बेसिक से मॉडरेट से एडवांस हर लेवल की यहाँ पे हो जाती है. आपको कंप्लीट एनालिसिस मिलता है, जीके के अपडेट्स मिलते हैं, राइट? एंड इट कवर्स ऑल दी एग्जाम्स. एंड जो पोर्टल है वहां पे आपको मिल जाता है भाई कंप्लीट इंटरैक्टिव ई बुक्स, आपको टॉपिक वाइज टेस्ट मिल जाते हैं, सेक्शनल मॉक्स मिल जाते हैं, फुल लेंथ मॉक्स मिल जाते हैं, आपको वीकली जी करंट अफेयर्स टेस्ट मिल जाता है, एंड कैट के साथ साथ बाकी सारे एग्जाम्स के आपको फुल लेंथ मॉक्स प्लस प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाते हैं, राइट? सो यू कुड कॉन्टैक्ट द गिवन हेल्पलाइन नंबर फॉर मोर information. So let us get started. Firstly, the World Bank will lend up to $1 billion to India to strengthen its health infrastructure. The lending will be divided into two complementary loans of $500 million each. The bank will support India's flagship Pradhan Mantri Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission, PMABHIM, which was launched in October 2021. The loans will prioritize health service delivery in 7 states, that is Andhra Pradesh, Kerala, Meghalaya, Odisha, Punjab, Tamil Nadu and Uttar Pradesh. Right? तो यहाँ पे वर्ल्ड बैंक जो है वो $1 बिलियन का लोन दे रहा है टू इंडिया हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने के लिए, राइट? सो अक्टूबर में गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की थी अक्टूबर 2021 में, PMABHIM, पीएम अभीम, which stands for प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, राइट? सो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन वाज लॉन्च्ड इन अक्टूबर 2021 एंड उसी को एड करने के लिए यहाँ पे ये $1 बिलियन का जो लोन है वो दिया जा रहा है. एंड बेसिकली दिस मनी is going to be used in the health service delivery in 7 states. Which are these 7 states? Andhra Pradesh, Kerala, Meghalaya, Odisha, Punjab, Tamil Nadu and Uttar Pradesh. Right? According to the Mudra portal, more than 38.58 crore loans have been extended since the inception of the scheme in April 2015. Out of this, over 26.35 crore loans have been extended to women entrepreneurs, that is 68%, and SC, OBC category borrowers received about 51% loans, that is 19.84 crore. As per the Ministry of Labour survey, PMMY helped in generating 1.12 crore net additional employment in the country from 2015 to 2018, right? So मुद्रा, बेसिकली मुद्रा लोन का फुल फॉर्म क्या है? माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी, राइट? सो मुद्रा स्टैंड्स फॉर माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी, राइट? तो 38.58 करोड़ लोन्स जो हैं वो दिए जा चुके हैं सिंस इट स्टार्टेड इन अप्रैल 2015, राइट? मुद्रा स्कीम जो है, मुद्रा पोर्टल शुरू हुआ था अप्रैल 2015 में एंड तब से लेके अब तक 38.58 करोड़ लोन्स दिए जा चुके हैं, राइट? सो फुलफिलिंग एंटरप्रेन्योरल एस्पिरेशंस फॉर मिलियंस. आप इसके फीचर्स यहाँ पे देख सकते हो दैट इट प्रोवाइड्स इजी एक्सेस टू क्रेडिट टू स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स, देन सिंपल डॉक्यूमेंटेशन एंड क्विक प्रोसेसिंग, लोन्स प्रोवाइडेड टू मीट बोथ term loan and working capital, affordable collateral free credit up to rupees 10 lakh. According to the report released by PhonePe and BCG, Boston Consulting Group, India's digital payments market will more than triple from $3 trillion to $10 trillion by 2026. In 2015, the Indian government launched its Digital India program with the objective to achieve a faceless, paperless and cashless status for financial transactions at the grassroots level. NPCI launched UPI in 2016, which enables interbank transactions through mobile devices instantly. Right? तो यहाँ पे फोन पे और BCG ने साथ में एक रिपोर्ट रिलीज किया है जिसमें ये लिखा हुआ है कि
अगले 3 सालों में, दैट इज बाय 2026, इंडिया का जो डिजिटल पेमेंट्स मार्केट है वो ट्रिपल हो जाएगा, राइट। करेंटली इट इज एट $3 ट्रिलियन, इट इज गोइंग टू बी $10 ट्रिलियन वहां पे, राइट। तो यहां पे आप देख सकते हो कि भाई एनपीसीआई ने लॉन्च किया था यूपीआई 2016 में, जो कि एनेबल करता है इंटर बैंक ट्रांजैक्शंस थ्रू मोबाइल डिवाइसेस ऑलमोस्ट इंस्टेंटली, राइट। सो आप यहाँ पे देख सकते हो 2021 में इट इज $3 ट्रिलियन एंड 2026 में $10 ट्रिलियन, राइट। सो मोर देन 3x का यहाँ पे ग्रोथ एक्सपेक्टेड है इंडिया के डिजिटल पेमेंट्स में, राइट। एंड अगर आप यहाँ पे बात करो शेयर ऑफ डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शंस की, सो 2021 में इट वाज 40%, 2026 में इट इज गोइंग टू बी 65%। तो out of every 100 monetary transactions that are happening, 65 transactions are going to be digital, right? And यहाँ पे अगर बात करो भाई share of digital in total merchant payments, 2021 में it was just 20%, 2026 में it is going to be 65%, right? So out of every 100 payments that are being made, 65 are going to be made digitally, right? RBI has granted approval to foreign banks in 18 countries to open Vostro accounts to settle international trade in rupees, right? So these 18 countries are Botswana, Fiji, Germany, Guyana, Israel, Kenya, Malaysia, Mauritius, Myanmar, New Zealand, Oman, Russia, Seychelles, Singapore, Sri Lanka, Tanzania, Uganda and UK, right? And Minister of State Finance Bhagwat Karad informed in the Rajya Sabha in July 2022, government informed that it would set up a mechanism to settle international trade in rupees, right? तो यहां पे भाई आरबीआई ने अप्रूवल ग्रांट कर दिया है फॉरेन बैंक्स, 18 कंट्री के फॉरेन बैंक्स को, कि वो अपना वॉस्ट्रो अकाउंट खोल सकते हैं ताकि इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो रुपीज में सेटल किया जाए, राइट। अभी मोस्टली जो फॉरेन ट्रेड होता है वो डॉलर्स में होता है, राइट। डॉलर इज सॉर्ट ऑफ वर्ल्ड करेंसी, राइट। एंड आरबीआई, especially the Indian government, have been trying for the past 2-3 years to somehow develop a mechanism जहां पे इंटरनेशनल ट्रेड हम अपने रुपीज में कर पाए, राइट। तो उसी की तरफ ये कदम है जहां पे 18 कंट्रीज के फॉरेन बैंक्स को अप्रूवल मिला है कि वो वॉस्ट्रो अकाउंट्स खोल सकते हैं ताकि इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो रुपीज में सेटल किया जा सके, राइट। द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड टू अक्वायर द जर्मन फर्म मेट्रो एजीज wholesale operations in India for 2,850 crores, right? So Reliance Retail Ventures Limited signed definitive agreements to acquire a 100% equity stake in Metro Cash and Carry India Private Limited. Metro started operations in India in 2003 as the first company to introduce a cash and carry business format in the country, right? तो जो यहाँ पे हमने देखा था कि भाई दिसंबर में रिलायंस ने एक्वायर किया हुआ था जर्मन फर्म मेट्रो, राइट, मेट्रो प्राइवेट लिमिटेड, 100% इक्विटी यहाँ पे एक्विजिशन हुई थी, उसका अप्रूवल अब मिल चुका है सीसीआई से भी, राइट। कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपना अप्रूवल इस एक्विजिशन को दे दिया, राइट। तो जब भी कोई मेजर एक्विजिशन होता है, मेजर मर्जर होता है, तो वहां पे अप्रूवल जरूरी होता है कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया का, जो कि पहले चेक करता है कि इस पर्टिकुलर मर्जर में, इस पर्टिकुलर एक्विजिशन में कोई एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस तो नहीं है, राइट। अब एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस क्या होती हैं? देखो, we are developing a marketplace economy, right? तो यहाँ पे competition is healthy, competition is considered healthy both for the consumer as well as for the producer, right? तो कभी कभी क्या होता है कि भाई competition kill करने के लिए जो बड़े players हैं वो साथ में मिल जाते हैं, राइट। सो ये इस पे चेक रखने का काम है एंटी कॉम्पिटिटिव एजेंसीज का, जैसे कि इंडिया की है कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई हैज इम्पोज्ड अ मॉनेटरी पेनल्टी of 22.7 million rupees on private lender RBL Bank Limited. Reason for not complying with certain directives on loan recovery agents. The RBI has found deficiencies in regulatory compliance after it examined complaints received against RBL's recovery agents during the financial years 2018-19 to 2021-22. RBL headquarters Mumbai. MD and CEO are Subramania Kumar. ठीक है, तो यहां पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने इंपोज किया है 22.7 मिलियन रुपीस का मॉनेटरी पेनल्टी आरबीएल बैंक पे, राइट। तो क्योंकि देखो गाइडलाइन है कि जब आप किसी को लोन देते हो, राइट, बैंक्स के लिए गाइडलाइन है कि जब आप किसी को लोन देते हो तो उस लोन को रिकवर करने के लिए आपको कौन कौन से तरीके अपनाने हैं और कौन कौन से तरीके आपको नहीं अपनाने हैं, राइट। तो यहाँ पे आरबीआई की भाई स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस हैं कि रिकवरी एजेंट्स के थ्रू आप लोन रिकवर नहीं कर सकते हो, राइट। बिकॉज रिकवरी एजेंट्स यूजुअली क्या करते हैं, दे रिसोर्ट टू राउडिज्म, होलीगनिज्म, राइट, एंड दैट इज स्ट्रिक्टली अ नो नो फ्रॉम आरबीआई साइड। एंड
देयर वर कंप्लेंट्स ऑन आरबीएल बैंक दैट दे वर इन्वॉल्व इन सर्टेन एक्टिविटीज, तो इसीलिए इन पे ये फाइन लगा हुआ है. Axis Bank and ITC, which is a leading FMCG company of India, joined hands to offer lending products and services to farmers who are a part of ITC's agriculture ecosystem. The aim is to enable the bank to reach out to the unserved and underserved farmers across rural regions. The bank will offer credit facilities for rural lending, products like farmer funding loans and gold loans. The bank will also leverage ITC Mars, which is Meta Market for Advanced Agricultural Rural Services, to address farmers' financial needs. Right? तो एक्सिस बैंक और आईटीसी ने साथ में मिलके कुछ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज लॉन्च किए हैं फार्मर्स के लिए, जो कि आईटीसी के एग्रीकल्चर इकोसिस्टम का पार्ट है. राइट? ताकि देखो फार्मर्स यूजुअली ऐसा सेक्शन है जो जिन तक बहुत ही कम प्रोडक्ट और सर्विसेज बैंक्स के पहुंच पाते हैं. राइट? तो यहाँ पे आईटीसी ने बोला कि भाई जो उनके एग्रीकल्चर सिस्टम से जुड़े हुए फार्मर्स हैं, जो उनके प्रोड्यूसर्स हैं, जो उनको प्राइमरी सप्लायर्स हैं, उनको कुछ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ऑफर की जाए, एंड फॉर दैट दे हैव कोलैबोरेटेड विद एक्सिस बैंक. राइट? Then, New York-based Signature Bank was shut by regulators in the US, becoming the second bank in the country after Silicon Valley Bank. The Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC, has been appointed as a receiver, which typically means it will liquidate the bank's assets to pay back its customers, including depositors and others. The standard insurance amount from FDIC is $250,000 per depositor per bank for each account ownership category. Right? तो बेसिकली जैसा अभी हमने न्यूज में देखा था कि सिलिकॉन वैली बैंक जो है उसको न्यूयॉर्क यूएस के रेगुलेटर्स ने बंद कर दिया था. सिमिलरली सिग्नेचर बैंक के साथ भी यही हुआ है. राइट? सो न्यूयॉर्क बेस्ड जो सिग्नेचर बैंक है उसको भी रेगुलेटर्स ने बंद कर दिया है. राइट? बिकॉज it will liquidate the bank's assets to pay back its customers. Right? इसके पास कस्टमर से जो पैसे लिए हुए थे, जो डिपॉजिट हुए थे, वो वापस लौटाने के पैसे नहीं थे, बिकॉज उन्होंने बहुत ज्यादा लोन्स, हेवीली लोन्स दे दिए थे. राइट? सो नेक्स्ट, द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड has approved a $3 billion 4-year extended financing arrangement for Sri Lanka. It paves the way for an immediate disbursement of about $333 million to the cash-strapped country. The new extended fund facility EFF arrangement program aims to restore Sri Lanka's macroeconomic stability and debt sustainability, mitigate the economic impact on the poor and vulnerable, and safeguard financial sector stability. Right? तो जो IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड है उन्होंने $3 बिलियन का लोन या फाइनेंसिंग अरेंजमेंट अप्रूव किया है 4 साल के लिए श्रीलंका के लिए. राइट? बिकॉज रिसेंटली वी हैव सीन दैट श्रीलंका वाज इन अ फाइनेंशियल टर्मोइल, एंड सो दैट इट गेट्स टू रिकवर एंड गेट बैक ऑन ट्रैक, यहाँ पे IMF ने ये फाइनेंशियल अरेंजमेंट एक्सटेंड किया हुआ है. राइट? Women employees constitute over 25% of the total workforce on average in the nationalized banks in the country. The largest public sector bank, the State Bank of India, has 26.7% women employees in their total staff strength, while Indian Overseas Bank has a maximum of 36% women staff, and Punjab National Bank has the least, which is 24% women staff strength. This data was provided by the Ministry of Finance in the Lok Sabha. Right? तो जो इंडिया के नेशनलाइज बैंक्स हैं, यानी कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो हैं, उसमें करीब 25% ऑफ टोटल वर्कफोर्स ऑन एन एवरेज आर विमेन. सबसे ज्यादा किसमें? सबसे ज्यादा है भाई इंडियन ओवरसीज बैंक में 36% विमेन स्टाफ है. सबसे कम है पंजाब नेशनल बैंक में 24%, एंड SBI जो कि लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है, इसमें 26.7% ऑफ द एम्प्लॉइज आर विमेन एम्प्लॉइज. राइट? सो ऑन एन एवरेज 25% ऑफ द टोटल वर्कफोर्स इज women. Right? And this data was given by the finance minister in the Lok Sabha. Egypt joined the BRICS New Development Bank as an official member. Right? So Egypt completed all the necessary procedures to become an eligible member on 20th February. BRICS New Development Bank was established in July 2014 after an intergovernmental agreement was signed by the partner nations at the 6th BRICS summit in Fortaleza. NDB Bank includes India, Brazil, Russia, China and South Africa as member countries. Right? तो यहाँ पे इजिप्ट ने
ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक को ज्वाइन किया है एज एन ऑफिशियल मेंबर। ब्रिक्स क्या है भाई? ब्रिक्स इज द इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, राइट? 5 कंट्रीज की ग्रुपिंग है ब्रिक्स। इन्होंने अपना बैंक एस्टैब्लिश किया हुआ था, न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसका अब पार्ट, जिसका एक ऑफिशियल मेंबर बन चुका है इजिप्ट, राइट? तो सबसे पहले भाई एनडीबी जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है वो कब एस्टैब्लिश हुआ था? 2014 में एस्टैब्लिश हुआ था, राइट? और एनडीबी के मेंबर कौन कौन है? इंडिया, ब्राजील, रशिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, जो कि ब्रिक्स, राइट? अभी इनके बाहर का एक मेंबर आया है, दैट इज इजिप्ट, राइट? तो 6th यहाँ पे मेंबर आ चुका है। Former Chief Justice of India, A.M. Ahmadi, passed away at 90 due to a brief illness. He was the 26th Chief Justice of India from October 1994 to March 1997. In 1964, he was appointed a civil and sessions judge in Ahmedabad, and he became the state's new law secretary. In 1976, he was appointed a judge of the Gujarat High Court, and later was elevated to the Supreme Court in 1988. Right? So, former Chief Justice of India, the 26th Chief Justice of India, A.M. Ahmadi, he has passed away due to illness. Right? So, इनका जो tenure था as the Chief Justice, that was from October 1994 to March 1997 as the CJI. Right? So, ये गुजरात हाई कोर्ट के जज थे, उसके बाद इनको एलिवेट किया गया था सुप्रीम कोर्ट में 1988 में, फिर 1994 में ही बिकेम द 26th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। बॉलीवुड एक्टर डायरेक्टर सतीश कौशिक passed away at the age of 66 in Delhi due to cardiac arrest. Kaushik was an alumnus of the National School of Drama and the Film and Television Institute of India, FTII. He was known for his iconic roles in Mr. India, तेरे नाम, रूप की रानी, चोरों का राजा, दीवाना मस्ताना, ब्रिक लेन, साजन चले ससुराल, अमंग अदर्स, राइट? तो सतीश कौशिक जो कि वन ऑफ द आइकॉनिक एक्टर्स, राइट? इनकी जो कॉमिक टाइमिंग थी उसकी काफ़ी तारीफ की जाती है। इनका डेथ हो गया, राइट, आफ्टर एट द एज ऑफ 66। सो ये अलमनस थे भाई एनएसडी, दैट इज नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के, और साथ ही साथ एफटीआई के, राइट? बोथ ऑफ दीज आर प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स इन द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। सो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा और एफटीआई के, दैट इज फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के, ये अलम रह चुके हैं, एंड ही इज नोन फॉर हिज रोल्स इन तेरे नाम, films like Mr. India, etc. World Wildlife Day 2023 is marked annually on March 3rd to celebrate the unique wild species and create awareness to help conserve them. Theme of 2023 is Partnerships for Wildlife Conservation. The 68th session of the UNGA has designated March 3rd as World Wildlife Day on December 20, 2013. Reason: to raise awareness about the conservation of the world's wild flora and fauna, right? So World Wildlife Day 2023 जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? 3rd March को सेलिब्रेट किया जाता है, and this is to celebrate the unique wild species and create awareness to help conserve these species, right? So 2013 से इस दिन को मनाया जाना शुरू हुआ था। So सबसे पहला जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया गया था वो मनाया गया था 3rd March 2014 में, एंड उसके बाद से हर साल 3rd March को ये मनाया जाता है, राइट? इस बार का थीम है पार्टनरशिप्स फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। द इंटरनेशनल डे फॉर डिसआर्मामेंट एंड नॉन प्रोलिफरेशन अवेयरनेस was observed on 5th March. The aim is to deepen the global public's understanding of how disarmament efforts contribute to enhancing peace and security, preventing and ending armed conflicts, and curbing human suffering caused by weapons. This day seeks to promote better awareness and understanding of disarmament issues among the public, especially young people. Right? तो डिसआर्मामेंट एंड नॉन प्रोलिफरेशन अवेयरनेस के लिए जो इंटरनेशनल डे है वो ऑब्जर्व किया जाता है 5th मार्च को। क्या है भाई ये डिसआर्मामेंट? डिसआर्मामेंट इज बेसिकली अपने जो आर्म्स हैं उनको कम करो, राइट? लेट्स से एक स्टेट के आर्सेनल में अ सर्टेन नंबर ऑफ आर्म्स हैं, एंड दैट इज for you to protect your country, protect your citizens in times of war, because you might have a enemy country, right? तो disarmament basically जो theory है वो ये है कि अगर एक country अपने arms कम करेगी, so that would make it more prudent for the other country, for the enemy country to also disarm itself, right? Because that gives a confidence, a sense of confidence कि कोई यहाँ पे वॉर लाइक सिचुएशन नहीं डेवलप की जाएगी, राइट? सो डिसआर्मामेंट की जो
आपके पास एग्जिस्टिंग आर्म्स है उनको आप कम करो, उनको डिस्ट्रॉय करो. देन नॉन प्रोलिफरेशन इज कि और नए आर्म्स आप ना जोड़ो, और नए मिसाइल्स आप ना जोड़ो. Right, that is non-proliferation. So International Day for Disarmament and Non-Proliferation is on 5th March. Right, so the aim is to deepen the global public's understanding of कैसे ये efforts can contribute to enhancing peace and security. Right, तो इससे आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट जो है वो खत्म हो सकता है और ह्यूमन सफरिंग जो है वेपन्स की वजह से जो होती है उसको भी आप कर्ब किया जा सकता है. International Women's Day is observed every year on 8th March to raise awareness about gender equality and create a better society free of gender bias. The day celebrates women and addresses issues such as women's equal rights, violence and abuse against women, and reproductive rights. 2023 theme is Digit All, Innovation and Technology for Gender Equality. This theme emphasizes the importance of technology in bringing gender issues to light. Right? So International Women's Day 8th मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है, एंड दिस इज टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट जेंडर इक्वालिटी, ताकि एक ऐसी सोसाइटी बनाई जा सके जहां पे जेंडर बायस ना हो. राइट, विमेन, मेन, ट्रांसजेंडर्स, इनको अलग अलग तरह से ना डिस्क्रिमिनेट किया जाए, बल्कि एक इक्वल सोसाइटी बनाई जा सके. राइट, इसके लिए इंटरनेशनल वुमेन्स डे जो है 8th मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है. राइट, नो स्मोकिंग डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन द सेकेंड वेंसडे ऑफ मार्च. So in 2023, no smoking day falls on 8th March. This is to encourage people to quit smoking and raise awareness about its harmful effects on their health. This year's theme is Stopping Smoking Improves Your Brain Health. The United Kingdom witnessed that people in the country are getting addicted to smoking. Right? So no smoking day जो है वो second Wednesday को, मार्च का जो second Wednesday होता है उस दिन no smoking day ऑब्जर्व किया जाता है, इस साल it is on 8th March. राइट, सो दिस इज टू एनकरेज पीपल कि स्मोकिंग को क्विट किया जाए और कैसे उसके क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं, एंड टू रेज अ कॉन्वर्जेशन ऑफ हाउ गिविंग अप एडिक्शन इज डिफिकल्ट, बट येट इट हैज टू बी गिवन अप बिकॉज इट इज फेटल एट द एंड ऑफ द डे. राइट, द इंटरनेशनल डे ऑफ विमेन जजेस इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 10th March to honor all female judges who have taken the lead in the fight against social injustice. This day is being observed with the campaign Women in Justice, Women for Justice. It is a symbolic day for the fight for gender equality and the fight against gender-based discrimination. In April 2021, UNGA enacted resolution designating 10th March as the International Day of Women Judges. Right, so the day we are talking about is International Day of Women Judges, and the date is 10th March, and this is to honor all female judges, right, who are leading the fight against social injustice. Right, and that is the theme. The women in justice is women for justice. Right, तो ये एक symbolic day है in the fight for gender equality and the fight against gender based discrimination. National Vaccination Day is observed every year on 16th March to spread awareness about the importance of vaccinations for human health. The theme for 2023 has not been announced, right, and the day was observed in 1995 when it was first observed in 1995 when the Indian government started the pulse polio immunization program. It focuses on the relevance of vaccinations in the battle against deadly diseases and appreciates the hard work of healthcare professionals. So हम बात करें यहाँ पे नेशनल वैक्सीनेशन डे या तो नेशनल इम्यूनाइजेशन डे की, राइट, सो जो कि 16th मार्च को मनाया जाता है, एंड 1995 में सबसे पहली बार ये मनाया गया था जब पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चल रहा था. राइट, नाउ आवर कंट्री इज पोलियो फ्री, बट व्हेन वी वर फाइटिंग द फाइट अगेंस्ट पोलियो, राइट, तो यहाँ पे जो वैक्सीनेशन किया जा रहा था पोलियो के अगेंस्ट जो इम्यूनाइजेशन हो रहा था उस टाइम पे नेशनल वैक्सीनेशन डे या नेशनल इम्यूनाइजेशन डे सबसे पहली बार मनाया गया था, और तब से हर साल 16th मार्च को वी ऑब्जर्व द नेशनल वैक्सीनेशन डे. राइट, तो यहाँ पे कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं भाई. इंडिया वैक्सीनेट्स ओवर 30 million प्रेग्नेंट women and 26 million children each year under the universal immunization program. Right, the International Day of Happiness, World Happiness Day, is celebrated every year on 20th March to create a kinder and happier world by urging people to adopt simple daily practices to be happy. Theme for this year is be mindful, be grateful, be kind. So on 12th July 2012, the UNGA proclaimed March 20 as the International Day of Happiness in its resolution.
This day was first celebrated in 2013, right? So March 20 वर्ल्ड हैप्पीनेस डे या इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, राइट? तो इस दिन मनाया जाता है ताकि लोगों को सिखाया जाए कि भाई आप कुछ सिंपल चीजें, कुछ डेली प्रैक्टिस अडॉप्ट कर सकते हो हैप्पी रहने के लिए। एंड इस बार का थीम भी कुछ ऐसा ही है कि बी माइंडफुल, बी ग्रेटफुल एंड बी काइंड, दैट इज ऑल दैट इज देयर टू बीइंग हैप्पी, राइट? सबसे पहली बार कब मनाया गया था? ये 2013 में मनाया गया था, राइट? सो 2012 की जुलाई में रेजोल्यूशन पास हुआ था यूएनजीए में, जहां पे प्रोक्लेम किया गया था मार्च 20 को एज द इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, राइट? World Oral Health Day is observed globally on 20th March every year with the primary aim of creating awareness about the importance of oral health. The theme for 2023 is Be Proud of Your Mouth, which is the same theme used for the past 3 years. World Oral Health Day was celebrated first on September 12, 2007 by the World Dental Federation, FDI. It is the birthday of Dr. Charles Gordon, the founder of FDI, that is the World Dental Federation, right? So World Oral Health Day जो है वो 20th March को observe किया जाता है because it is the birth anniversary of Dr. Charles Gordon, who is the founder of the World Dental Federation, right? And इस day का जो aim है that is to create awareness about the importance of oral health and the ways in which oral health could be taken care of, right? जो theme है वो है Be Proud of Your Mouth, right? The theme for 2023. The International Day of Forests is celebrated each year on 21st March to raise awareness about the importance of forests and trees for the survival of humanity. 2023 theme is Forests and Health. This day can be traced back to 1971 when the Food and Agriculture Organization established World Forestry Day. In 2011, the UN declared years 2011 to 2020 as the International Decade of Forests, right? So International Day of Forests जो है वो हर साल 21st मार्च को मनाया जाता है, and this is to raise awareness about the importance of forests and trees humanity के लिए, right? Humanity में कितना importance रखते हैं forests और trees, इसको लोगों को रिमाइंड करने के लिए 21st मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार का थीम है भाई फॉरेस्ट एंड हेल्थ, ठीक है? तो वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे जो है वो ट्रेस बैक हुआ होता है 1971 में, जब दैट इज फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने एस्टैब्लिश किया था वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे, एंड 2011 में डिक्लेयर हुआ था कि 2011 से लेके 2020 वाला जो डेकेड है इट इज गोइंग टू बी नोन एज द इंटरनेशनल डेकेड ऑफ फॉरेस्ट्स। World Water Day is celebrated on 22nd March every year to spread awareness about the water crisis all over the world. UNGA adopted World Water Day in 1992. The theme for 2023 is Accelerating the Change to Solve the Water and Sanitation Crisis. In 2015, the world was committed to Sustainable Development Goal 6 as part of 2030 agenda, a promise to provide safely managed water and sanitation by 2030. The report is published on World Water Day every year, right? So World Water Day जो है वो 22nd मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है हर साल, and this is to spread awareness about water crisis जो कि सारी दुनिया में हो रहा है, right? There are many countries, many areas in the world जहाँ पे there is no access to safe drinking water, right? And safe drinking water is a very basic necessity जो कि हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का भी पार्ट है, राइट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो डेडलाइन है दैट इज 2030, जहाँ पे हमको अचीव करना है सेफ ड्रिंकिंग वाटर की अवेलेबिलिटी एंड सैनिटेशन की अवेलेबिलिटी, राइट? सो बोथ ऑफ दीज आर नॉट अवेलेबल येट, एंड दिस इज टू रेज अवेयरनेस अबाउट इट दैट वर्ल्ड वाटर डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 22nd मार्च, है ना? इस बार का जो थीम है वो है एक्सेलरेटिंग द चेंज टू सॉल्व द water and sanitation crisis. World Meteorological Day is observed on 23rd March every year to celebrate the formation of World Meteorological Organization WMO in 1950. This day was designated to raise awareness about various weather related issues and to encourage people to take action to address them. 2023 का जो थीम है वो है The Future of Weather, Climate and Water Across Generations. The theme highlights the changes in weather and climatic conditions and their effects on Earth. Right? So, World Meteorological Day जो है वो 23rd मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है हर साल, and this is because इसी दिन 1950 में
World Meteorological Organization was formed, right? And 2023 का जो theme है, that is the future of weather, climate and water across generations, right? So this theme highlights the changes in weather and climatic conditions and their effects on Earth. Earth hour was observed annually on last Saturday in March from 8:30 p.m. to 9:30 p.m. In 2023, this day was observed on 25th March at 8:30 p.m. local time. It is a worldwide movement organized by the World Wildlife Fund (WWF) to encourage individuals, communities, and businesses to turn off non-essential electric lights for 1 hour. It was first started in Sydney, Australia on 31st March 2007 at 7:30 p.m. local time and has since gained popularity and momentum. So हम यहाँ पे बात करें अभी अर्थ आवर की, जो कि मनाया जाता है लास्ट सैटरडे जो होता है मार्च का, राइट? मार्च का जो लास्ट सैटरडे होता है उस दिन 1 घंटे के लिए 8:30 PM से 9:30 PM के लिए जो भी नॉन एसेंशियल इलेक्ट्रिक लाइट्स वगैरह होती है उनको बंद कर दिया जाता है. एंड दिस इज टू क्रिएट एन अवेयरनेस कि भाई देयर इज अ नीड टू सेव अर्थ, राइट, एंड सेव द नेचर. तो इसको ऑर्गेनाइज करती है WWF, दैट इज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड. The Appointments Committee of the Cabinet has approved the appointment of a 1988 batch IPS officer of the Maharashtra cadre, Rashmi Shukla, as Director General of Sashastra Seema Bal (SSB). Presently, she is serving as the Additional Director General of CRPF. SSB is a border protection force of India deployed along the borders with Nepal and Bhutan. SSB was founded in 1963. Headquarters are in New Delhi, right? तो जो अपॉइंटमेंट्स कमिटी है कैबिनेट, अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ द कैबिनेट है, जिसके कि चेयरमैन कौन होते हैं भाई? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ACC इज नोन एज अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ द कैबिनेट, राइट? तो जो मेजर अपॉइंटमेंट्स होते हैं गवर्नमेंट के, यूनियन गवर्नमेंट के, वो किए जाते हैं अपॉइंटमेंट्स कमिटी के थ्रू एंड इसके चेयरमैन होते हैं प्राइम मिनिस्टर, राइट? सो इन्होंने अप्रूव किया है अपॉइंटमेंट ऑफ 1988 बैच IPS ऑफिसर रश्मि शुक्ला, जो कि महाराष्ट्र कैडर की है, एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल. सशस्त्र सीमा बल क्या है? सशस्त्र सीमा बल एक बॉर्डर प्रोटेक्शन फोर्स है. कहाँ पे भाई? जो कि नेपाल और भूटान के बॉर्डर्स पे डिप्लॉय किए जाते हैं. तो SSB was founded in 1963 and headquarters are in New Delhi. Hockey India has appointed South African Craig Fulton as the new chief coach of the Indian men's hockey team. He will succeed Australian Graham Reid, who resigned in January 2023. He has nearly 25 years of coaching experience and earned 195 caps over a span of 10 years for South Africa. He also played Atlanta and Athens Olympic Games. He was named the Belgium Coach of the Year after he guided his club KHC Dragons to the Belgium Hockey League title in the 2020-2021 season. Right? तो हॉकी इंडिया ने अपॉइंट किया है साउथ अफ्रीकन क्रेग फ्यूल्टन को एज द न्यू चीफ कोच ऑफ इंडियन मेंस हॉकी टीम, राइट? तो इंडियन मेंस हॉकी टीम के नए कोच हैं साउथ अफ्रीका के क्रेग फ्यूल्टन, राइट? सो ही इज अ वेरी सेलिब्रेटेड कोच, ही हैज बीन अ वेरी सेलिब्रेटेड प्लेयर एज वेल, राइट? एंड इनको बेल्जियम कोच ऑफ द ईयर अवार्ड भी मिला हुआ है फॉर 2021 सीजन ऑफ बेल्जियम हॉकी लीग. Crown Prince Sheikh Ahmed Nawaf Al Sabah has been reappointed as the Prime Minister of Kuwait. This decision came more than a month after the government resigned due to increased tensions with the parliament. Crown Prince Sheikh Mishal Al Ahmed Al Sabah, who also oversees the duties of the ruling emir, has nominated Sheikh Ahmed. Although political parties are prohibited in Kuwait, the legislature has more power than similar bodies in other Gulf monarchs. Right? तो यहाँ के जो कुवैत के प्राइम मिनिस्टर जो थे क्राउन प्रिंस शेख अहमद नवाब अल सबा, इनको रीअपॉइंट किया गया है एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कुवैत, राइट? नेशनल पीपल्स पार्टी प्रेसिडेंट कॉनराड के सांगमा हैज टेकन ओथ एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ मेघालय फॉर द सेकेंड कॉन्सिक्यूटिव टर्म. गवर्नर फागू चौहान हैज एडमिनिस्टर्ड द ओथ ऑफ ऑफिस टू सांगमा. The sworn-in ceremony was attended by PM Narendra Modi, BJP President JP Nadda, and Home Minister Amit Shah. While Nationalist Democratic Progressive Party (NDPP's) Neiphiu Rio will take oath as Nagaland Chief Minister. Right? तो मेघालय के जो चीफ मिनिस्टर हैं कॉनराड के सांगमा, उन्होंने दोबारा अपना टर्म शुरू किया है, राइट? So he took oath as the Chief Minister of Meghalaya again.
So name is Conrad K. Sangma, state is Meghalaya, and this is his second consecutive term. Similarly, नागालैंड के जो चीफ मिनिस्टर बने हैं वो बने हैं निफ्यू रियो, राइट. Senior Nepali Congress leader Ramchandra Paudel has been elected as the third president of Nepal. He defeated CPN UML Vice Chair Subhash Chandra Nembang. He won the presidential elections with 33,802 votes, while his opponent received 15,518 votes. The president is elected by an electoral college consisting of the members of the federal parliament and the provincial assembly. The tenure of Vidya Devi Bhandari as Nepal's president will be ended on 12th March. Right? So, नेपाल कांग्रेस के जो सीनियर मेंबर हैं रामचंद्र पौडेल, राइट, इनको इलेक्ट किया गया है एज द थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल. राइट, अभी करंट प्रेसिडेंट कौन थी? करंट प्रेसिडेंट थी विद्या देवी भंडारी. राइट, इनका टेन्योर खत्म हो चुका है, नए प्रेसिडेंट बन चुके हैं रामचंद्र पौडेल. रोहित जावा has been appointed as the managing director and chief executive officer MD and CEO of Hindustan Unilever Limited, जो कि एक FMCG कंपनी है, with effect from 27th June 2023. He is presently the chief of transformation for Unilever and has been appointed for 5 years. He will succeed Sanjeev Mehta, who has the who was the part of Hindustan Unilever since 2013. He will also join Unilever Leadership Executive, right? तो HUL, that is Hindustan Unilever Limited, which is a leading FMCG company, इनके नए मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं रोहित जावा, राइट. सो इनके पहले थे संजीव मेहता, जिनका टेन्योर खत्म हो चुका है, एंड इनको रोहित जावा को अपॉइंट किया गया है 5 साल के लिए एज द MD and CEO of HUL. Tata Consultancy Services has appointed veteran K. Krithivasan as MD and CEO designate with effect from 16th March 2023. He has replaced Rajesh Gopinathan, who resigned recently. Gopinathan completed his 6 years as CEO and was reappointed as CEO till 2027. He will continue with the company till September 15 and provide transition and support to K. Krithivasan. Before this role, K. Krithivasan served as president and global head of BFSI business group TCS. Right? तो TCS ने अपॉइंट किया है वेटरन K. Krithivasan को as the MD and CEO. Right? So जो TCS के MD CEO थे गोपीनाथन, राजेश गोपीनाथन, इन्होंने रिजाइन कर दिया एंड नाउ ही विल स्टिल स्टे विद द कंपनी ताकि ये अपना हैंडओवर दे सके. राइट, सो ट्रांजिशन एंड सपोर्ट प्रोवाइड कर सके K. Krithivasan को बिफोर ही presumes the charge as the MD and CEO of the company, TCS. The board of Hero MotoCorp has appointed Niranjan Gupta as the new CEO with effect from 1st May 2023. He has been elevated from his current designation of Chief Financial Officer and Head Strategy and Mergers and Acquisitions. He has played an important role in Hero MotoCorp's partnerships with Harley Davidson and Zero Motorcycles. While Pawan Munjal will continue as executive chairman and whole-time director on the company's board. Right? तो हीरो मोटरकॉर्प का जो बोर्ड है उन्होंने अपॉइंट किया है निरंजन गुप्ता को एज द न्यू CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर. राइट. The Bureau of Indian Standards (BIS) has prohibited sale of hallmarked gold jewelry or gold artifacts without the 6-digit alphanumeric hallmark unique identification number HUID after 31st March 2023. The aim is to protect consumers and enhance their confidence in the purchase of hallmarked gold jewelry. It would ensure traceability and assure quality in gold jewelry. The 6-digit HUID number was introduced on 1st July 2021. Right? तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स BIS जो है इन्होंने करेंटली ये बोल दिया है कि भाई जिस भी गोल्ड ज्वेलरी या गोल्ड आर्टिफैक्ट पे 6 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक हॉलमार्क नहीं है वो सेल नहीं किया जा सकता है. राइट, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मान लो ये ज्वेलरी है तो 3 चीजें मेंशन होती हैं. राइट, एक है आपका BIS स्टैंडर्ड मार्क, राइट, दैट इज BIS स्टैंडर्ड के हिसाब से ये है. देन कि कितना प्योर है ये गोल्ड. राइट, तो प्योरिटी मार्क जो है वो भी होता है, साथ ही साथ एक 6 डिजिट का अल्फान्यूमेरिक कोड जो कि इंट्रोड्यूस किया गया था 1 जुलाई 2021 को, ये भी होता है. राइट, तो ये तीनों चीजें होनी चाहिए. बिना 6 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक कोड के अब कोई भी ज्वेलरी नहीं बेची जा सकती है.
राइट, ऐसा क्यों हुआ है? दिस इज टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स एंड एनहांस देयर कॉन्फिडेंस इन द परचेज ऑफ हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी। ऐसा ना हो कि नकली सोना बेचा जा रहा हो, राइट। तो जब कंज्यूमर भी देखेगा कि भाई इसमें अल्फा न्यूमेरिक कोड है जो कि वो वेरीफाई कर सकते हैं, सो दैट गिव्स देम कॉन्फिडेंस टू परचेज गोल्ड ज्वेलरी, राइट। सो एंड इट ऑल्सो एंश्योर्स ट्रेसिबिलिटी एंड क्वालिटी का भी अश्योरेंस यहाँ पे मिल जाता है। इंडिया होस्टेड द क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स इन न्यू दिल्ली on 3rd March 2023. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar chaired the meeting. The foreign ministers of Australia and Japan and the Secretary of State of the United States participated in the meeting. It is an opportunity for the ministers to continue their discussions held at their last meeting in New York in September 2022. Right? Quad एक grouping है, 4 members की grouping as the name suggests. Which are these 4 members? India, United States of America, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, राइट। एंड स्ट्रेटेजिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुपिंग है इंडिया के लिए, बिकॉज इंडिया का जो ट्रेड रूट है वो काफ़ी इन कंट्रीज से होके जाता है, राइट। एंड आप यहाँ पे देख सकते हो इंडिया पैसिफिक रीजन के जो चारों इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं वो इसके पार्ट है, राइट। तो इंडिया में यहाँ पे फॉरेन मिनिस्टर, क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग होस्ट हुई थी, जहाँ पे इंडिया के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं डॉक्टर एस जयशंकर ने इस मीटिंग को चेयर किया था, एंड फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएस के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं इन्होंने इस मीटिंग को अटेंड किया था इंडिया में, राइट। इंडिया एंड लिथुआनिया हैव अग्रीड टू वर्क इन द एरियाज ऑफ डीप टेक स्टार्टअप्स एंड फोर्ज लास्टिंग टाइज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेमीकंडक्टर चिप्स। मिनिस्टर जितेंद्र सिंह एंड इकोनॉमी एंड इनोवेशन वाइस मिनिस्टर ऑफ लिथुआनिया Karolis Aimaitis discussed ways and means to revive the 2010 agreement in the area of science and tech. In 2010, a revised Indian counter draft with a new modifications was formally submitted to the Lithuanian and its formal response is still awaited. Right? तो इंडिया और लिथुआनिया ने एग्री किया है कि डीप टेक स्टार्टअप्स की फील्ड में एरियाज में हम साथ में काम करेंगे, एंड सेमीकंडक्टर चिप्स में की मैन्युफैक्चरिंग में भी लास्टिंग टाइज की यहाँ पे बात हुई है, राइट। सो सेमीकंडक्टर चिप्स जो हैं, दीज आर द वर्ड ऑफ द ईयर, वर्ड ऑफ द डेकेड जो भी कह लो, बिकॉज दीज आर हाईली इन डिमांड। जो भी टेक रेवोल्यूशन हो रहा है, 4th रेवोल्यूशन हो रहा है इंडस्ट्री में, उसमें सेमीकंडक्टर इज द न्यू ऑयल कहा जा रहा है, राइट। सो दिस एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड लिथुआनिया इज ऑन दोज लाइन्स। Australian Prime Minister Anthony Albanese arrived in Ahmedabad, Gujarat on a state visit to India on 8th March 2023. During his 4-day tour, he will also visit Mumbai and Delhi as well. He will be accorded a ceremonial welcome at Rashtrapati Bhavan, and he will call on Draupadi Murmu. He will hold the annual summit with Prime Minister Modi to discuss areas of cooperation under the India-Australia Comprehensive Strategic Partnership. राइट। तो ऑस्ट्रेलिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं एंथनी एल्बनीज, ये इंडिया आए हुए हैं, ये इन्होंने अपनी इंडिया की टूर जो है, स्टेट विजिट जो है वो स्टार्ट की अहमदाबाद गुजरात से, राइट। एंड ही विल विजिट मुंबई एंड दिल्ली एज वेल। प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज डेडिकेटेड द 10-lane and 118 kilometer long Bengaluru-Mysuru expressway in Karnataka to the nation. It was constructed at a cost of over 8,400 crore rupees. It will reduce the travel time between Bengaluru and Mysuru from 3 hours to about 75 minutes and boost connectivity and socio-economic growth in the Karnataka. He also laid the foundation stone for the Mysuru-Kushalnagar highway. Right? तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक 10-lane का हाईवे जो कि 118 किलोमीटर लॉन्ग है डेडिकेट किया है मैसूर से बेंगलुरु एक्सप्रेसवे, राइट। सो मैसूर एंड बेंगलुरु बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट सिटीज ऑफ द कर्नाटका स्टेट, एंड कर्नाटका में इलेक्शंस भी आने वाले हैं। साथ ही साथ भाई इंफ्रास्ट्रक्चर जब डेवलप होता है, सो दैट एड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ एंटायर इकोनॉमी, राइट। तो ये जो ट्रैवल टाइम है, जो अभी 3 घंटे लगते थे बेंगलुरु से मैसूर जाने के, वो अब 75 मिनट्स तक कम कर दिए गए हैं, राइट। सो दिस इज गोइंग टू बूस्ट कनेक्टिविटी एज वेल एज द सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ इन द रीजन, राइट। एंड ही ऑल्सो लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर मैसूर कुशालनगर हाईवे। नेक्स्ट, the Bureau of Indian Standards (BIS) has launched the Learning Science via Standards series for students. Focus aimed to use scientific concepts, principles, and laws to help students understand their practical applications in manufacturing, functioning, and testing of quality characteristics of different products. This series is in a continuum
with an earlier BIS initiative under which standards clubs are being established in educational institutions. Right? So BIS, which is the Bureau of Indian Standards, they have launched learning science via standards. Right? ये एक स्टूडेंट्स के लिए सीरीज है जो कि साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स और लॉज को सिखाती है स्टूडेंट्स को, और उनको ये भी सिखाती है भाई कि इनका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या होता है मैन्युफैक्चरिंग में, फंक्शनिंग में और क्वालिटी टेस्टिंग में. राइट? सो दिस इज इन कंटिन्यूम विद एन अर्लियर BIS इनिशिएटिव जो कि नाम था स्टैंडर्ड्स क्लब्स, जो कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में एस्टैब्लिश किए जा रहे थे. The Ministry of Education has shortlisted around 9,000 schools across the country for its flagship Pradhan Mantri Schools for Rising India (PM-SHRI). The institutions were selected based on 6 broad parameters including curriculum, access and infrastructure. Human resources and gender equity were assessed. PM Modi announced this scheme on 5th September 2022. It is a centrally sponsored scheme aim to upgrade and develop around 14,500 schools. Right? तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने शॉर्टलिस्ट किया है करीब 9,000 स्कूल्स को अक्रॉस द कंट्री फॉर PM-SHRI, विच इज फ्लैगशिप प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया. राइट? तो ये जो इंस्टीट्यूशंस थे इनको सिलेक्ट किया गया है 6 ब्रॉड पैरामीटर्स के बेस पे, जो कि है करिकुलम, एक्सेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन रिसोर्सेज और जेंडर इक्विटी. राइट? तो ये जो स्कीम है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अनाउंस की थी ऑन द टीचर्स डे ऑफ 2022, एंड इसका एम है टू अपग्रेड एंड डेवलप अराउंड 14,500 स्कूल्स नेशन वाइड. इंडिया होस्टेड अ मीटिंग ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स SCO top officials on 29th March. National Security Advisor Ajit Doval addressed the meeting. Pakistan and China attended the SCO NSA meeting virtually. SCO is an intergovernmental organization established in 2001. Members are India, China, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Pakistan, Russia, Tajikistan and Uzbekistan. So India hosted a meeting of National Security Advisors, right? जो SCO है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स थी उनकी मीटिंग इंडिया ने होस्ट की, जहाँ पे द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ चाइना एंड पाकिस्तान इन्होंने वर्चुअली पार्टिसिपेट किया था इस मीटिंग में, और ये मीटिंग दिल्ली में हुई थी, जहाँ पे इसको चेयर किया था हमारे जो NSA हैं अजीत डोवाल साहब ने. राइट? अब SCO जो है ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 2001 में एस्टैब्लिश हुआ था, जिसके मेंबर्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है. देखो यहाँ पे इंडिया मेंबर है, पाकिस्तान मेंबर है, चाइना मेंबर है और रशिया भी मेंबर है. राइट? एंड साथ ही साथ कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान भी मेंबर्स हैं. राइट? सो देयर आर 8 मेंबर्स ऑफ द SCO. देन Odisha's Chief Minister Naveen Patnaik has unveiled the iconic Dakota aircraft of legendary leader Biju Patnaik for public viewing at the Bhubaneswar airport. It was unveiled on the 107th birth anniversary of the former Chief Minister of Odisha. It was brought from Netaji Subhash Chandra Bose International Airport, Kolkata to Bhubaneswar on 18th January 2023. A 10-member team of aerospace research development required has dismantled the aircraft and packed it in proper shape for public viewing. Right? तो भुवनेश्वर एयरपोर्ट पे जो उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक, इन्होंने जो आइकॉनिक डकोटा एयरक्राफ्ट था, जो कि बिजू पटनायक, जो कि इनके फादर भी हैं, फादर थे. राइट? उन्होंने वो डकोटा एयरक्राफ्ट, राइट, ही वाज अ पायलट, ही यूज्ड टू फ्लाई द आइकॉनिक डकोटा एयरक्राफ्ट, जो कि अभी तक कहाँ पे था? अभी तक था ये कोलकाता में, उसको लाया गया भुवनेश्वर एयरपोर्ट में पब्लिक व्यूइंग के लिए. राइट? सो दिस इज ऑन द ओकेजन ऑफ 107th birth anniversary of the former chief minister of Odisha, that is Biju Patnaik sahab. Tamil Nadu has notified Tantai Periyar Wildlife Sanctuary as the 18th wildlife sanctuary in the state. It is spread over 80,567 hectares in the forest areas of Antiyur and Gobichettipalayam taluks in Erode district. It is close to Malai Mahadeshwara Wildlife Sanctuary, BRT Wildlife Sanctuary and Kaveri Wildlife Sanctuary in Karnataka. It also acts as a connecting point between Nilgiris Biosphere Reserve and Kaveri South Wildlife Sanctuary. Right? तो तमिलनाडु ने नोटिफाई किया है तांताई पेरियार वाइल्ड सैंक्चुरी को एज द 18th वाइल्ड सैंक्चुरी इन द स्टेट. राइट? ये 80,000 हेक्टेयर्स के एरिया में स्प्रेड है. राइट? एंड इट इज क्लोज टू मलाई महादेश्वरा वाइल्ड सैंक्चुरी. Rajasthan becomes the first state in India to pass the Right to Health Bill. Right? Very important news this is.
Under this bill, private hospitals will not be able to charge emergency patients and will be compensated by the state. Free healthcare services including diagnostics, drugs, emergency transport, emergency care, and procedure will be provided at public institutions. In the case of medico-legal nature, no private or public hospital can delay treatment on grounds of police clearance. राइट तो राजस्थान सबसे पहला स्टेट बन चुका है इंडिया का जिन्होंने राइट टू हेल्थ बिल को पास कर दिया. अब यहाँ पे एक्ट बनने वाला है विच इज गिविंग द सिटीजन्स ऑफ द स्टेट राइट टू हेल्थ. राइट तो हेल्थ केयर जो है वो एक बेसिक राइट की तरह जो कि एग्जिस्ट करता है, अब इसको स्टैट्यूटरी राइट भी बना दिया गया है. राइट अब क्या सेलेंट फीचर्स है भाई? सो अप्रोप्रिएट स्टेट बजट दिया जाएगा हेल्थ को एंड विद इन 6 months ऑफ एनैक्टमेंट डेवलप एंड इंस्टीट्यूशनलाइज अ ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी फॉर हेल्थ for equitable distribution of healthcare workers across hospitals, social audit and grievance redressal mechanism. Then within 1 year, prescribing standards for quality and safety at all levels of hospitals. Then guarantee availability of government funded healthcare services as per distance or geographical area, ensuring that there is no direct or indirect denial to anyone for any government funded healthcare service. Institute effective measures to prevent, treat and control epidemics and other public health emergencies, then setting up state and district level health authorities. Time magazine has released its annual list of the 50 greatest places in the world for 2023. Among the chosen destinations are 2 locations from India, Ladakh and Mayurbhanj. Ladakh is a high altitude region which is famous for its breathtaking landscapes, crystal clear lakes and snow-capped mountains. On the other hand, Mayurbhanj is a lesser known destination located in the eastern state of Odisha. The list also includes Willamette Valley, Rio Grande, etc. Right? So Time Magazine ने रिलीज किया है इनका जो एनुअल 50 ग्रेटेस्ट प्लेसेस इन द वर्ल्ड जो आता है, इनका हर साल आता है. राइट टाइम मैगजीन का. सो 50 ग्रेटेस्ट प्लेसेस इन द वर्ल्ड में इंडिया के 2 डेस्टिनेशंस हैं, एक लद्दाख राइट और एक अनयूजुअल नेम है मयूरभंज. राइट मयूरभंज इज अ वेरी ब्यूटीफुल डिस्ट्रिक्ट इन द ईस्टर्न स्टेट ऑफ उड़ीसा. राइट तो जहाँ पे लद्दाख में भाई आपको दिख जाते हैं भाई क्रिस्टल क्लियर लेक्स, स्नो कैप्ड माउंटेन्स, वहीं पे मयूरभंज जो है ये ऐसा डेस्टिनेशन है जहाँ पे आपको लेक्स दिखते हैं, जहाँ पे आपको फॉरेस्ट दिखते हैं एटसेट्रा. राइट द यूएस हैज फॉर्मली रिकॉग्नाइज्ड द मैकमोहन लाइन एज द इंटरनेशनल बाउंड्री बिटवीन इंडियाज अरुणाचल प्रदेश एंड चाइना. The US has also rejected Beijing's claim that the northeastern state falls under Chinese territory. A bipartisan resolution acknowledged Arunachal Pradesh as an integral part of India. The resolution titled Reaffirming the State of Arunachal Pradesh as Indian Territory and Condemning the People's Republic of China's Provocations in South Asia. Right? So, McMahon line जो है, McMahon line is this line between Arunachal Pradesh and Tibet, जो कि चाइना प्रेजेंट डे चाइना है. राइट दिस वाज द लाइन दैट ब्रिटिशर्स हैड डिमार्केटेड. राइट बट अभी तक यूएस इसको नहीं मानता है, मानता था, चाइना अभी भी नहीं मानता है बिकॉज चाइना क्लेम्स अरुणाचल प्रदेश टू बी पार्ट ऑफ तिब्बत और चाइना. राइट बट नाउ यूएस ने फॉर्मली रिकॉग्नाइज कर लिया है मैकमोहन लाइन को कि ये इंटरनेशनल बाउंड्री है बिटवीन अरुणाचल प्रदेश एंड चाइना. राइट एंड दे हैव आल्सो कंडेम्ड पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना's प्रोवोकेशंस इन साउथ एशिया, जैसे कि ताइवान में और अरुणाचल प्रदेश में. अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 पब्लिश्ड बाय द UN Sustainable Development Solutions Network, India ranked 125 based on the various parameters of happiness. India's neighboring countries such as Nepal, China, Bangladesh and Sri Lanka have a higher ranking than India. Finland tops the ranking for the 6th consecutive year with a score of 7.8, followed by Denmark and Iceland. Out of the 137 countries, Afghanistan has ranked last. Right? So World Happiness Report जो आ जाती है वो कौन इसको पब्लिश करता है? This is published by UN Sustainable Development Solutions Network. Right? It is very important. The रिपोर्ट प्लस कौन इसको पब्लिश करता है. राइट सारी रिपोर्ट्स यूएन नहीं पब्लिश करती है, कुछ रिपोर्ट WF पब्लिश करती है, कुछ रिपोर्ट्स और अलग अलग एनजीओस पब्लिश करती हैं. सो जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है इट इज पब्लिश्ड बाय यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क एंड इसमें इंडिया का जो रैंक है आउट ऑफ 137 कंट्रीज हमारा रैंक है 125 एंड अफगानिस्तान इज एट द लास्ट. राइट
एंड हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज हैं जैसे कि भाई नेपाल हो गया, चाइना हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, उनकी रैंकिंग इंडिया के ऊपर है. एंड द टॉप इज फिनलैंड, देन यू हैव डेनमार्क, आइसलैंड, इजराइल, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, लुक्समबर्ग एंड न्यूजीलैंड. According to the Passport Index 2023 released by Art and Capital, 144 is the rank of Indian passport. In 2023, India ranked 138th out of 199 countries. The ranking was topped by UAE, United Arab Emirates, with a mobility score of 181, followed by Sweden, Germany, Finland, Luxembourg, Spain, France, Italy, the Netherlands, and Austria. Note, India ranked 85th out of 199 countries in the Henley Passport Index, right? तो Henley Passport Index में इंडिया का रैंकिंग है, इंडिया के पासपोर्ट का रैंकिंग है 85th आउट ऑफ 199. वहीं पे आर्ट एंड कैपिटल की जो रैंकिंग है पासपोर्ट इंडेक्स है उसमें आउट ऑफ 199 इंडिया का रैंक है 144. सो देयर इज अ ह्यूज गैप, राइट? According to UN World Water Development Report, about 26% of the world's population does not have safe drinking water and 46% lack access to safely managed sanitation. Between 2 to 3 billion people experience water shortages for at least 1 month per year. This poses severe risks to livelihoods and access to electricity. The global urban population facing water scarcity is projected to double from 930 million in 2016 to 1.7 to 2.4 billion in 2050. Right? So waterless countries का यहाँ पे आप देख सकते हो, just 10 countries account for 60% of the world population without access to clean water, right? तो UN World Water Development Report के हिसाब से करीब 26% of the world's population के पास अभी भी safe drinking water का access नहीं है. वहीं 46% लोगों के पास अभी भी safely managed sanitation का access नहीं है, right? And these are all part of our sustainable development goals जिसका deadline है 2030. RRR's Natu Natu has created history by winning the prestigious Academy Awards 2023 in the Best Original Song category. The music of Natu Natu was given by M.M. Keeravani and lyrics by Chandra Bose, while India's The Elephant Whisperers, directed by Kartiki Gonsalves, won the award for Best Documentary Short Subject. Best Actress Michelle Yeoh, Everything Everywhere All at Once. Best Actor Brendan Fraser, The Whale, right? तो RR का जो सॉन्ग है नाटू नाटू, इट हैज क्रिएटेड हिस्ट्री बिकॉज इट हैज वॉन द प्रेस्टिजियस अकेडमी अवार्ड जिसको हम ऑस्कर्स कहते हैं इन द बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी, राइट? सो ऑस्कर्स फॉर द बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी और अकेडमी अवार्ड फॉर द बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी RRR के नाटू नाटू सॉन्ग को मिला हुआ है, राइट? वहीं पे जो इंडिया की फिल्म थी, डॉक्यूमेंट्री फिल्म थी द एलिफेंट विस्परर्स, राइट, इसको मिला है अवार्ड फॉर बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट. 68th Indian Grandmaster D. Gukesh was honored with the Player of the Year Award 2023 by the Asian Chess Federation for winning the gold medal with a record-breaking score of 911 in the 44th Chess Olympiad at Mahabalipuram. Most active federation, All India Chess Federation. Man of the Year, Tamil Nadu, Chief Minister M.K. Stalin. Best Women's Team of the Year, Indian Women's Team. Men's Coach of the Year, Grandmaster R.B. Ramesh. Women's Coach of the Year, Grandmaster Abhijit Kunte. राइट? तो हम यहाँ पे बात करें भाई एशियन चेस फेडरेशन अवार्ड्स की, राइट? एशियन चेस फेडरेशन ने अवार्ड्स दिए हैं जिसमें प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है भाई इंडिया के यंग टैलेंट ग्रैंड डी गुकेश को, जो कि 60th ग्रैंड मास्टर हैं इंडिया के, राइट? एंड इन्होंने जो 44th चेस ओलंपियाड हुआ था महाबलीपुरम में, उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था विद स्कोर ऑफ 9/11, राइट? एंड मोस्ट एक्टिव चेस फेडरेशन मिला है इंडिया चेस फेडरेशन को. मैन ऑफ द ईयर मिला है तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन को बिकॉज ऑफ हिज एफर्ट्स इन कंडक्टिंग द चेस ओलंपियाड एट महाबलीपुरम, राइट? एंड बेस्ट वुमेन्स टीम ऑफ द ईयर मिला है इंडियन वुमेन्स टीम को. बेस्ट कोच ऑफ द ईयर मिला है GM RB रमेश को. एंड वुमेन्स कोच ऑफ द ईयर मिला है ग्रैंड मास्टर अभिजीत कुंटे को. वेट लिफ्टर मीराबाई चानू has won the 2022 BBC Indian Sportswoman of the Year award after a public vote. She becomes the first athlete to win the award twice in a row after winning for the year 2021. At the 2020 Tokyo Olympics, she became the first Indian to win a silver medal in weightlifting. Para sportswoman Bhavina Patel, table tennis player, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है भाई प्रीतम सिवच को, जो कि वुमेन हॉकी प्लेयर हैं.
इमर्जिंग प्लेयर मिला है नीतू गंगास को जो कि बॉक्सर हैं, एंड बेस्ट गोल मिला है विच इज कॉल्ड पुस्कास अवार्ड टू मार्सिन ओलेक्सकी, राइट। सो वेट लिफ्टर जो मीराबाई चानू जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स में हिस्ट्री क्रिएट की थी बाय बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन टू विन अ सिल्वर मेडल इन वेट लिफ्टिंग, इनको मिला है 2022 का बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड। नवीन जिंदल was honored with a lifetime achievement award from the University of Texas at Dallas. He was conferred in recognition of his accomplishments in industry, politics, and education. He was an alumnus of the University of Texas at Dallas 1992 batch. He is the second person to receive this award from the University of Texas after Nobel laureate Aziz Sankar. Currently, he is serving as the chairman of Jindal Steel and Power Limited. राइट। तो नवीन जिंदल जो कि इंडस्ट्री लीडर हैं, राइट, इनको ऑनर किया गया है विद द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एट डैलस, राइट। तो यहाँ के एलुमनस रह चुके हैं, इनको ये अवार्ड दिया गया है फॉर रिकॉग्निशन ऑफ हिज अकम्प्लिशमेंट्स इन इंडस्ट्री, पॉलिटिक्स एंड एजुकेशन, राइट। सो 1992 बैच के ये एलम रह चुके हैं, एंड ही इज द चेयरमैन ऑफ जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड। आलिया मीर हैज बीन ऑनर्ड विद द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड 2023 by the administration for her conservation efforts in the region. Jammu and Kashmir Lieutenant Governor Manoj Sinha facilitated her with the Wildlife Honor Award. She is also the first woman from Kashmir who works for the Charity Wildlife SOS organization, which is part of the wildlife rescue team. She was awarded for her achievements in bear rescue in Kashmir, rescue and release of wild animals, right? So Wildlife Conservation Award की बात हो रही है, and वो मिला है आलिया मीर को, राइट। ये अवार्ड दिया जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने, एंड आलिया मीर इज अ रेसिडेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, सो शी हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन इन कश्मीर हु वर्क्स फॉर द चैरिटी वाइल्ड लाइफ एसओएस ऑर्गेनाइजेशन, जो कि वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू टीम की पार्ट है, राइट। तो इनको ये अवार्ड मिला है फॉर हर अचीवमेंट्स इन बेयर रेस्क्यू इन कश्मीर। एशियाज लॉन्गेस्ट एवर साइकिल रेस वॉज फ्लैग्ड ऑफ फ्रॉम बख्शी स्टेडियम इन श्रीनगर, विच इज जम्मू एंड कश्मीर, एंड इट विल कल्मिनेट एट कन्याकुमारी इन तमिलनाडु. The race will cover the longest highway, National Highway 44, distance of 3,651 kilometers, passing through 12 major states, 3 major metropolitan cities, and over 20 major cities of the country. It has been accorded the status of Asian Ultra Cycling Championship by the World Ultra Cycling Association. So एशिया का जो सबसे लॉन्गेस्ट साइकिल रेस है वो फ्लैग ऑफ हुआ है बख्शी स्टेडियम से, जो कि श्रीनगर में है, एंड वो चलेगा कन्याकुमारी तक, राइट। सो नेशनल हाईवे 44 जो है इसका जो डिस्टेंस 3651, इतना ही लंबाई है, लॉन्गेस्ट एवर साइकिल रेस है, राइट। स्पेनिश टेनिस प्लेयर कार्लोस अल्कराज हैज won his maiden 2023 Indian Wells title after defeating Russian Daniil Medvedev 6-3, 6-2 in the final. With this feat, he has also dethroned Novak Djokovic to reclaim world number 1 spot. He also became the youngest world number 1 ever after his triumph and claimed his third Masters 1000 title. He joined Rafael Nadal as the only player to win at least 3 as a teenager. Nadal won 6 before turning 20. Right? So Carlos Alcaraz अब बन चुके हैं भाई वर्ल्ड नंबर 1. Right? He's become the world champion in the tennis world number 1 spot, and he has taken it from Novak Djokovic, and he has become the youngest world number 1 ever, right? So Carlos Alcaraz, Spanish tennis player. Rani Rampal has become the first woman in the sport to have a stadium named after her in Raebareli, Uttar Pradesh. The MCF Raebareli has renamed the hockey stadium as Rani's girls hockey turf. Earlier this year, she made a successful comeback to the Indian hockey team during the tour of South Africa, where she was selected as one of the 22 players in the squad. Right? तो रानी रामपाल बन चुकी हैं फर्स्ट वुमेन जिनके नाम पे स्टेडियम आया हुआ है, राइट, जिनके नाम पे स्टेडियम बनाया गया हुआ है रायबरेली उत्तर प्रदेश में, राइट। तो ये स्टेडियम है रानीज गर्ल्स हॉकी टर्फ. Red Bull's driver Max Verstappen has won the season opening Bahrain Grand Prix 2023 held at Bahrain International Circuit. He defeated Red Bull's Sergio Perez
who placed second in the race. It was the first time he had won in Bahrain and also the first time he had triumphed in a Formula One opener. Fernando Alonso from Aston Martin placed third, followed by Carlos Sainz Jr., who is Ferrari's driver. Right? तो रेड बुल के जो ड्राइवर है मैक्स वर्स्टैपेन, राइट, ही इज करेंटली द वर्ल्ड चैंपियन एज वेल. इन्होंने जो ओपनिंग सीजन होता है, सीजन का ओपनिंग होता है, ओपनिंग रेस बहराइन ग्रैंड प्री, वो जीता है एंड दिस इज हिज करियर्स फर्स्ट बहराइन ग्रैंड प्री. राइट, ही हैज वॉन सेवरल ग्रैंड प्रीज, राइट, इन्यूमरेबल ग्रैंड प्रीज ही हैज वॉन, बट ऐसा कभी नहीं हुआ था कि इन्होंने ओपनिंग सीजन मतलब सीजन ओपनिंग का जीता हुआ था, एंड दिस इज हिज फर्स्ट सच विन. सेकेंड आए हैं इन्हीं के टीममेट सर्जियो पेरेज, राइट. थर्ड इज आस्टन मार्टिन के ड्राइवर फर्नांडो अलोंसो एंड fourth was Carlos Sainz Jr. Mumbai Indians have won the inaugural Women's Premier League final held at the Brabant Stadium in Mumbai. Right? So they defeated Delhi Capitals by 7 wickets. Mumbai Indians captain Harmanpreet Kaur, most valuable player of the tournament Hayley Matthews, orange cap Meg Planning, purple cap Hayley Matthews, emerging player of the season Yastika Bhatia, fair play award Mumbai Indians and Delhi Capitals, catch of the season Harmanpreet Kaur. राइट, तो जो सबसे पहला इनॉग्रल विमेंस प्रीमियर लीग है उसके फाइनल में मुंबई इंडियंस वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स हुआ था एंड मुंबई इंडियंस हैव वॉन द फाइनल. सो मुंबई इंडियंस इज द विनर ऑफ द फर्स्ट एवर विमेंस प्रीमियर लीग. हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मांडविय रिलीज्ड द बुक इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम काउपॉक्स टू वैक्सीन मैत्री एट वर्ल्ड बुक फेयर इन न्यू दिल्ली. एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री सज्जन सिंह यादव has authored the book. Dr. Mandviya has urged the writers to inculcate research-based documentation. The research-based documentation reflects knowledge and science that have proven exemplary in times of crisis. Right? तो जो हेल्थ मिनिस्टर है डॉक्टर मनसुख मांडविया, इन्होंने वर्ल्ड बुक फेयर जो कि न्यू दिल्ली में था उसमें बुक रिलीज की जिसका टाइटल है इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम काउपॉक्स टू वैक्सीन मैत्री. इसके ऑथर हैं एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर सज्जन सिंह यादव. राइट, सो दिस बुक रिफ्लेक्ट्स ऑन द इंडियाज जर्नी ऑफ बिकमिंग अ वैक्सीन सुपर पावर. राइट, गुलाम नबी आजाद, a former chief minister of Jammu and Kashmir and union minister, has written an honest and forthright autobiography, Azad. It will be launched in New Delhi on in April. This book chronicles Azad's political journey and provides insights into the significant political changes that India has undergone over the past 5 decades. Published by Rupa Publications India. Right? So गुलाम नबी आज़ाद जो कि फॉर्मर जम्मू एंड कश्मीर के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं एंड यूनियन मिनिस्टर भी रह चुके हैं एंड रिसेंटली ही रिटायर्ड फ्रॉम द राज्यसभा. इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी जिसका टाइटल है आज़ाद. पब्लिशर है रूपा पब्लिकेशंस इंडिया. So that brings us to the end of this session. Thank you.